Let's go, guys. Another live stream, another day. 11th May, Monday, and market is just about to open in 6 minutes. Just give me a second. फिर हम साथ में gold, ES and NQ तीनों की एनालिसिस करेंगे and then we will talk about कि आज हमारा बायस क्या है and आज हम किस में क्या ट्रेड लेंगे. What will be our? Just give me a second. Hello guys, what's up? What's up? How was your weekend? What did you want to do? This is NQ. We have our GEX levels right here. Market is just about to open in 5 minutes. And if you see, this is our pre-market. And what's market doing in our pre-market? It's a whole pre-market. We have some like failed option right here. But right now, as always, mostly जैसा market करती है, market open होने से पहले, market is creating a kind of range at our point of control, as always. Right, like here. If you see what our GEX level is showing right here, we have some important ones like this one. This is GEX 9 NDX. जो most important होते हैं वो हमारे NDX और triple Q वाले होते हैं. You can see how price was reacting when it got tapped into our GEX 9 level. Exactly same at this hour. This is our GEX 5 of NQ1. You can see how price reacted as a resistance. What happened? Gold. Just some gold देखते हैं एक बार. Let's watch gold. This is gold. We have a nice rejection from this Jack 6 और उसके बाद एक clear जब हमारे around कॉमिक सेशन स्टार्ट हुआ एक नाइस पोजीशन मिला हमें यहाँ पे पूरा गैप फिल हुआ यहाँ पे. दिस इज आवर बैलेंस लेवल. मार्केट केम इनटू आवर बैलेंस लेवल एंड मोस्टली मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया. एंड नाउ अभी मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रही है? हमारे पॉइंट ऑफ कंट्रोल से भी ऊपर. दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ लास्ट कॉमिक सेशन. मार्केट अभी भी उसके ऊपर ट्रेड कर रही है. सो वी जस्ट ब्रोक दिस वैल्यू एरिया लाइक दिस फेयर प्राइस जो हमारे यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हुआ था. This one right here. So and we are just, you can see the continuation of a buyers की. They are aggressively buying and absorbing sellers. So if this is the kind of level जहाँ पे तुम re-entry देख सकते हो. But this is a very huge buying position यहाँ से, and we have some nice support and resistance kind of areas above like this GEX 3 GLD. In gold GLD is the important one जो हम देखते हैं. GCM is like nice, but GLD is like better. Okay. So you can see how market is now reacting from our GLD level. But still, you can see we have some selling pressure right here, right too. But we don't want to trade यहाँ से. If market इसके ऊपर रहती है तो we want to sell. If we look for a sell on gold, then we will only look जब हमारे point of control के नीचे market accept करेगी तो. Why gold moved at high? Because of the news, I think. अभी एक news आई थी. What was the news? We deployed deep roaming submarines instead of Hormuz, Iran said. That's why maybe कल हमारा CPI है तो definitely पोजीशन बिल्डिंग हो रही होगी ट्रेडर्स की. वो जो ओवरऑल हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्लो है, इंस्टीट्यूशनल काइंड ऑफ जो पोजीशनिंग है वो भी हमारी ओवरऑल क्या थी, बेयरिश थी उसमें गोल्ड में. जैसा COT डेटा में पब्लिक ने सेंड करा था उसमें हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में जो हमारा COT था लास्ट वीक का, उसमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे वो काफ़ी एग्रेसिवली गोल्ड को बाय कर रहे थे. बट इस वीक में
जो हमारी सैटरडे संडे को रिपोर्ट आती है सीओ की, उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने लॉन्ग्स को हटा के शॉर्ट्स इंक्रीज करे थे। तो दिस कुड बी अ ये सीओटी डेटा इज लाइक सीओटी डेटा, गामा लेवल्स, ओपन इंटरेस्ट, वो ये बताता है आपको सीओटी के जो मार्केट में जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हेज फंड्स हैं, जो लिक्विडिटी पोजीशंस है मार्केट में, वो उनमें कितना कॉन्ट्रैक्ट्स लगा रखे हैं उन्होंने। My volume profile is not getting drawn. What do you mean? Is there some error? कोई error आ रहा है उसमें या कुछ ऐसा कुछ? Market just opened. We have some put support right here. Market open, get into a put support, which is also our point of control, and boom. And today I think NASDAQ में काफी अच्छा दिन होगा आज हमारा, and we will take a trade. This is our pre-market value area high. Whatever range comes while drawing only that is coming. I guess there is some glitch or error. I think like restart करके देख लो या फिर उसको हटा के टूल बार से दोबारा ऐड करके मे बी इट वो ओ व्हाट अ मार्केट ओपनिंग या श्योर okay our value area high just dropped right here. This is our value area high of pre-market. We have some areas above and we see what's happening at our VWAP. This that is our VWAP and you can see जहाँ पे हमारा पुट सपोर्ट था वहीं पे हमारा फर्स्ट डिस्काउंट जोन था VWAP का, वे मार्केट फाउंड द सपोर्ट एंड मार्केट ओपन यहाँ पे हुई, नीचे आई एंड बूम पूरा फ्लश अप। वी वांट टू सी के मार्केट जो हमारे इंपॉर्टेंट कैक्स लेवल से यहाँ से मार्केट कैसा रिएक्शन करती है। आई वांट टू सी अगर मार्केट को अब यहाँ से बाय करना है तो विल जस्ट टेक अ बाय आफ्टर द रिट्रेसमेंट। बट अगर मार्केट की यहाँ पे मूड है आज कुछ रिवर्स करने का आफ्टर द न्यूज और रेंज करने का व्हाटएवर, सो आई वांट टू सी कि यहाँ पे जो हमारे बायर्स हैं उनको कैसे ट्रैप करती है मार्केट। सो आई वांट टू सी एब्जॉर्प्शन। Right now you can see this is a squeeze, buy side squeeze. Yes. I think same is happening with IBS, right? Yes. What about this? Rupees, this is 5 minute people invest, not like a 5 minute opening candle. It's almost full like around 280, 282, 425 time, around 120, 130 points. अगर टूल बार वाले FRVP से नहीं हो रहा तो एक बार इंडिकेटर वाले से ट्राई करके देख लो, जो एंकर्ड वाला होता है। किसी और ब्राउजर में देखा तो हाँ, एप्लीकेशन से डेफिनेटली कर सकते हो। See, this is the level we want to look out for. If we will take a buy on this trend. First of all.
This is the gamma wall which we should look for if we take a buy. Yeah. The value area high, I want a nice retest if we will buy this. You can see market creating सिर्फ एक single candle में market creating, how market is creating value higher, higher and higher, which means buyers are accepting the price. Okay. Now what I'm gonna see, we're just gonna drop to the 1 minute time frame and we'll add the CVD for our confluence right here and see what market is doing. Perfectly following our candle. So the market में there's nothing like no absorption, no abnormality. I mean market candle. It's just doing perfectly fine as of now. I just want to see how market will react at our value area high or as this higher volume node. And this just अभी हमारे 5 मिनट की जो कैंडल है वो अभी क्लोज हुई है this one. The market is reacting or kind of rejecting at our GEX 7, GEX 10 level. जितना higher level होता है उतना interesting to watch होता है. Right, यहाँ से we want to see an absorption of the sellers. Let's go to the 150. It might help me. We are on NQ, so I think we have to go lower, like 50, 40, 41, I guess. So, okay, now we are at value area high. Now I want to see an absorption of the sellers. मेरी आईडी में कोई इशू हुआ है वर्किंग ऑन एप्लीकेशन एज वेल मेरे को वैल्यू एरिया शो वर्क कर लेता हूँ. Yes, yes, you should. We want to see a continuation यहाँ से. Market just tapped into our value area high and now trying to go above. You can see the delta. Delta is positive for this candle, but our candle closed below, like it's a bearish candle. But how it closed with a nice wick above our value area high, and we can see an absorption of the sellers. But still, that is not a A plus setup confirmation, so we still have to wait. Because the market's just open, it's just 7 minutes, so we can't rush in the market. Sellers should protect this level. Again at our value area high. We want to see one of those जिसकी हमने संडे को बात करी थी, या तो absorption, divergence, trap, something we want to see with our CVD and the price. That will be a very nice confirmation for us. And on charts too, I want to see an absorption from a nice area. Now market is again going to our VWAP. This is very interesting. A fair price, market is again going to at our fair price also. And you can see an initiative by the buyers survey. So now if buyers are really strong, then I don't want buyers to break this level again, which I want buyers to protect this level, which is our value area high. So from where I will look for a buy. I will look for a buy above this. So I'm just gonna wait for now. What's up guys? How was the weekend? संडे को कुछ बैक टेस्टिंग करी, क्या करा संडे को आप लोगों ने? What did you all do? You can type
It's a nice rejection from our value area high again, like a Friday, जैसे फ्राइडे को मार्केट ने वैल्यू एरिया हाई को रिजेक्ट करता. We want to see an acceptance because in CVD it's not like making a higher high. You can see this candle and उसके बाद हमारी इस कैंडल ने क्या क्रिएट करा है, हायर हाई. बट इस कैंडल ने क्या क्रिएट करा है, नेगेटिव डेल्टा. बट नॉट, it's not a aggressive buying. We want to see a clean trending buy. See, जिस तरह से हमारी कैंडल मूव हो रही है वैसा हमारा CVD मूव नहीं हो रहा है यहाँ पर. इट्स अ काइंड ऑफ लैग इन इट. जो हमारा डेल्टा है वो सपोर्ट नहीं करता जो जिस तरह से हमारी मार्केट मूव हो रही है, जिस तरह से प्राइस मूव हो रहा है इसको. लाइक मोस्ट ऑफ द डेल्टा हमारा क्या है यहाँ पे, अगेन दोबारा नेगेटिव, बिग नेगेटिव कैंडल. See how our delta is making lower lows, but our price is just stuck at right here in this kind of range. So if this candle also closed around right here, then we can say जो हमारे sellers है, they are getting absorbed, they are getting trapped right here. और फिर possibly क्या हो सकता है यहाँ से, nice buy from our value area high. So we'll see how this candle will close and act. Candle will just close in our minute. Yes, okay. Delta is slight positive, but this candle is पूरी negative candle. और हम कहाँ से आ रहे हैं, हम फेयर प्राइस से आ रहे हैं. Remember this. Our price, our market is what market ने भी क्या क्या करा है. मार्केट ने वीवेब हमारे फेयर प्राइस से आ रही है मार्केट, और जो हमारे दोनों बैंड्स है प्रीमियम के वीवेब के, उनको मार्केट ने ब्रेक वो करा है ब्रेक. उसके बाद वी हैव वैल्यू एरिया हाई जिसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप अप करा है और रीटेस्ट करा है. एंड यू कैन सी इफ आई जस्ट ओपन, just a second. If I go and open a delta also in this, then you can see there is a negative delta. Yeah, I was about to say this one, negative delta, which means there was a huge high selling pressure right here. और यहाँ पे sellers को क्या करा है, फिर absorb करा है. So right now जो हमारी possibility है मोस्टली क्या होती है, as for now अभी buying की, but we're not gonna buy. कैसे ही buy कर लिया हमने. Just gonna wait. Like you can see this candle created lower low, but यहाँ पे हमारा सिर्फ नॉर्मल था. उसके बाद मार्केट now creating little bit higher high यहाँ पर, but यहाँ पे मार्केट is not creating higher high. So even not यहाँ पे हमारे sellers absorb हो रहे थे, but यहाँ पे हमारे buyers उतने aggressive strong नहीं है to follow through the market right now. Okay, now they are getting on to it. I'm gonna test a small quantity right here. So let's see. And our initial value balance is also be over in next 15 minutes. As for now, market is just closed. Candle just closed out the point of control. I'm gonna test one quick buy यहाँ पे, अगर मैं kind of low अगर हम catch कर सकते हैं यहाँ से, and then I'm targeting this gamma level of this call resistance also. It's a nice level.
So I'm targeting this, and let's see if it will reach there or not. So far so good. And where is our entry? Definitely I'm gonna wait कि market यहाँ पे क्या करती है, and according to that I will manage it. We are at a double premium zone. Okay. I don't wanna see market SL to entry just right here. I wanna see a squeeze यहाँ पे. I don't want to see कि हमारे premium band पे market यहाँ पे reject करे, जहाँ पे we have aggressive buying and selling दोनों pressure यहाँ पे. So I'm just kind of safe. My entry was like यहाँ पे, and already like SL to be we're just testing it. Let's see, still in. Our initial value balance will be over in next 10 or 14 minutes. उसके बाद we will look for our that one setup जो हम लेते हैं, a nice intraday setup, and target a nice zone. As of now you will see at our second band how market is reacting. There's a huge, okay, I think, there's a buying absorption यहाँ पे which is running on at our premium VWAP, and यहाँ पे हमारा क्या है, GAX 511. Right here you can see how market is reacting from our exact this level. तो मार्केट है, जब मार्केट ओपन हुई है तो इन जस्ट नेक्स्ट थ्री और फोर जो हमारी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी मार्केट ने जो क्रिएट करी थी, अभी शायद मार्केट उसी के ही बीच में है. यस, जो हमारी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है मार्केट जस्ट अरेंजिंग इन बिटवीन. एंड अगर मार्केट इनिशियल वैल्यू बैलेंस भी इसके अराउंड ही क्रिएट करती है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. फिर इसके बाद सेलर्स आर गेटिंग अब्सॉर्ब यहाँ पे. और डेल्टा was going right यहाँ तक नाइस, एंड उसके बाद इट फ्लिप्ड काइंड ऑफ राइट है. स्टिल इतना एग्रेसिवली नहीं फ्लिप हुआ है. यू कैन सी सम sellers are getting absorbed right here. Can I remove this? If you see what's happening with gold at our value area high of previous comic session, you can definitely look for a buy यहाँ से after the nice retest at our point of control, because what market is doing here, market is creating or accepting the value higher and higher and higher, which means buyers are ready to pay the premium price each time market is like buyers and sellers जिस प्राइस पे एग्री कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर, वहीं पर हमारे जो बायर्स हैं वो प्राइस को दोबारा प्रीमियम पे ले जाने के लिए एग्री कर रहे हैं. Our S&P is also at a very important area, X 5 right here. Let's get back to the NASDAQ क्योंकि S&P I don't think so आज इतना मूव कर रहेगा as always. This is nice. See how perfectly market reacted to our premium VWAP, जहाँ पे हमने पहले buyers को trap करा, and then there was a huge orders यहाँ पे buying and selling दोनों के.
तो वी नो जब बाइंग जहाँ पे हमारे काफ़ी एग्रेसिव ऑर्डर्स हैं उनको सेलर्स ने यहाँ पे टेक डाउन कराया नीचे, तो जब मार्केट दोबारा बिग ऑर्डर्स पे आएगी तो वो हमारे बिग ऑर्डर्स क्या बन जाएंगे, एज अ रेजिस्टेंस फॉर द सेलर्स. Yes, I use Vantage for the live account. I'm the like IB affiliate with them, so मेरे साथ अभी तक कोई दिक्कत हुई नहीं है. आई थिंक जो है मेरे साथ उनके साथ भी जो वेंटेज यूज करते हैं, इट्स प्रीटी गुड. I've been using since the like for last 4 years, 4 or 5 years. My first broker was Octa FX. Octa FX. Then I will transfer to the Vantage FX. So तब से Vantage FX थी. And there is no aggression यहाँ पे by the buyers. We want to see a nice break above. And initial value balance will be over in next 10 minutes. Will be very interesting to see what market will do उसके बाद. Because as for now, क्योंकि अभी मार्केट की न्यूज़ भी आई है 2-3, एक तो, और कल हमारा CPI भी है. Let's see again, मार्केट दोबारा कहाँ पे आई, वैल्यू एरिया हाई, एंड अगेन मार्केट इज ट्राइंग, the buyers हमारे they are trying to push above यहाँ से. We have a VWAP pending right here. We have a nice KEX7, KEX8, and there is HPL, right? HPL, I don't think so it's necessary, so I'm just gonna delete it. This one is put support is very important. So I think this will hold today's market. And from the value area high, we can again look for an entry, but only after confirmation of the CVD or the by the deep trades. In the next 9 minutes, we will take a trade after initial value balance, because right now buyers are holding this value area high right here. Every time they are getting back, यहाँ पे हमारे sellers हैं, उनको क्या होते हैं, वो absorb हो जाते हैं. So this is how purely this candle, a nice bearish candle, CVD. But how this candle close with a wick, which means sellers are still getting absorbed. चाहे जो हमारा delta है वो sellers का aggressive है, but still they are getting absorbed यहाँ पे. But market is not like जो हमारे buyers हैं, they are not इतना strong enough कि वो इस जो हमारे सेकंड बैंड है हमारा VWAP का उसको भी ब्रेक कर सके टू एक्सेप्ट द प्राइस मच हायर. Like इतना प्रीमियम प्राइस बायर्स के लिए, दिस इज अ एक्सपेंसिव प्राइस फॉर द बायर्स. दैट्स व्हाई दे, इवन दो बायर्स अगर एग्रेसिव है मार्केट में, बट स्टिल दे आर नॉट दैट एग्रेसिव के इस लेवल को भी वो एक्सेप्ट कर सके. दैट्स व्हाई मार्केट अगेन वेंट टू आवर वैल्यू एरिया हाई जहाँ से हम ऊपर गए थे. Again, if you're watching on Discord, then I would suggest you for the better video quality, you can switch to the YouTube. Now see how our delta is reacting. Our delta is creating lower low. See, our delta is creating lower low. But right now you can see how price is moving. Price is not creating lower low as of now. On a 5-minute candle, let's see what's happening. It was a very big candle. See this. I'll remove this. Yes. If we see it cleanly, or let me just remove this also. If you see this, how market was in a balance, market broke this balance, broke the balance, went again inside the balance, tried to absorb the sellers, but failed again, going back inside the balance. And if you go to the 1-minute time frame or 3-minute time frame, and we still have like 6 minutes left. Delta profile, there is a very huge buying pressure. You can see मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे हमारा buying pressure है.
वो मैंने सिर्फ वैल्यू एरिया हाई और इस एब्जॉर्प्शन को देख के बता दिया था, बट अगर हम उसके लिए अलग से एक इंडिकेटर यूज करें, दिस डेली डेल्टा प्रोफाइल, देन यू विल सी इस एरिया पे देयर इज अ ह्यूज बाइंग डेल्टा एट एग्जैक्ट हमारे वैल्यू एरिया हाई पे, सी दिस। और हमारा ह्यूज सेलिंग डेल्टा का है फिर अगेन एट आवर सपोर्ट, दिस इज पुट सपोर्ट ऑप्शंस, this is a put support right here. Now market is at our VWAP again, fair price. Now we will see for the buyers and sellers what market wanna do. Our delta and price is finally following each other as of now, but our initial value balance will be over in next 5 minutes. Where we want after that we will take a trade, look for a trade actively. Now we have these two gex levels also above the put support. I want to see how market will react because ये जो हमारे दो gex levels हैं, they are also like kind of merging with our VWAP fair price. Let's see जैसे ये हमारा sellers absorb हुए इस candle पे, so again sellers are they're trying aggressively, so if they are still यहाँ पे they will get absorbed or not. Four minutes. Also let's see what's happening. Gold, yes, gold again rejected from our gex 3. आई डोंट थिंक सो। मार्केट ने आज क्या करा है, मार्केट एक्यूमुलेटेड जैसा वो हमेशा करती है बिफोर द 6 बजने से पहले जब हमारा कॉमर्स सेशन स्टार्ट होता है, छोटा सा एक्यूमुलेशन, उसके बाद एक प्री मार्केट 550 पे एक बुलिश कैंडल बनी थी काफ़ी अच्छी, जिसको बायर्स ने होल्ड करा था, वहाँ पे एग्रेसिव बाइंग की एंट्री थी और उसके बाद मार्केट फिर पूरा बुलिश हो गया। And S&P 500 also getting a bit retracement, not as much जितना NASDAQ बना रहा है, but still now this is very important. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट इस पुट सपोर्ट को ब्रेक करती है नीचे, देन यू विल सी देयर इज अ ह्यूज चांस कि मार्केट फिर नीचे फ्लश आउट कर सकती है एट अवर गेक्स 9 और गेक्स 4 लेवल, और मे बी हमारा जो प्रीवियस क्लोज दिस, is there any previous, yeah, this is value area low right here, so probably value area low तक भी आ सकती है और this gex 4, so this put support is very important to hold for the buyers as of now. और मार्केट दोबारा यहाँ से हमारे बायर्स को उसको सेलर्स को ट्रैप कर सकती है, बिकॉज दिस वाज आल्सो आवर अराउंड, ओके, आवर पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाज मूव्ड यहाँ से यहाँ पे, right here, this is our point of control. Okay, so now I want market to protect these two levels if buyers buyers want to go above, but right now market is holding at our gex 8 level, and as I said इसमें तीन चीजें होती है, ट्रिपल क्यू, NDX एंड NQ, दिस वन, बट जो हमारे दो मेन होते हैं जिसमें इंस्टीट्यूशनल फ्लोज होते हैं ऑप्शन पोजिशनिंग के, वो हमारा ट्रिपल क्यू और NDX होता है, सो दीज आर द टू मेन लेवल्स एंड यू कैन सी दोनों लेवल्स काफी पास है यहाँ पर, एंड ऑल्सो दिस इज द फेयर प्राइस ऑफ आवर VWAP, बट देयर इज ऑल्सो अ थिंग टू लुक आउट फॉर, वी हैड अ ह्यूज बाइंग डेल्टा यहाँ पर, जो मार्केट ने क्या करा है यहाँ पर, ब्रेक करा है नीचे, तो जब दोबारा मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर ऊपर जाएगी जस्ट लाइक दिस, जैसे अभी गई है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, वो सेलर्स के लिए एक रेजिस्टेंस और एज अ सप्लाई बन जाएगा। यू कैन सी एग्जैक्ट यहाँ पे टैप आउट करने के बाद कहाँ पे गई है मार्केट, पूरा फ्लश आउट नीचे, फ्लश आउट कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से अगेन बायर्स ट्राइंग टू यू नो टू hold down the market, and there's also we have this huge higher volume node plus selling delta, which means ये जो हमारा bubble है, it's a very huge selling pressure यहाँ पे, and we are in a discount, first of all we're in a discount price,
So we wanted market to hold this point of control or this put support. And what's our CBD is doing? There's a nice selling delta also. So it's following. अभी कुछ ऐसा absorption या फिर कुछ trap नहीं है. It's just market reaction. Nothing जो हमें बोले कि okay, our initial value balance is just over. So let's just reset our all this volume profile and draw our custom one. From 9 to 929, and you can see this way we have a point of control above, and our value area high is right here, जहाँ पे अभी market है actually, right? This is a pre-market value area high, and this is our initial value balance value area high also. This one, जहाँ पे भी market reject कर लिया जहाँ से. And what market is doing? First 30 minutes so market ने करा है, market was creating value above. You can see market started right here, market creating a small value, and there's a huge value market created, then again market created a nice value right here. But उन दोनों value को market ने अभी क्या करा है, break करा है. So we want, if market is the value area low by the way, so if market हमारी जो ये first value है जो create करी थी इसके ऊपर जाती है, क्योंकि दिस इज अ बैलेंस, जहाँ पे वैल्यू क्रिएट हुई है दिस इज अ बैलेंस फॉर द मार्केट. सो अगर ये बैलेंस पे जाती है, ब्रेक करती है, देन देयर विल बी अ वेरी हाई चांस कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर सकती है. दिस इज जस्ट आवर स्मॉल कॉन्फिडेंस. मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर जाएगी तो एंट्री ले लेनी है. जिससे कॉन्फिडेंस, जो हमारा मेन कॉन्फिडेंस होगा, जो कंफर्मेशन होगा, वो ऑब्वियसली नॉर्मल वॉल्यूम प्रोफाइल अगर इफ यू वांट टू यूज एंड आवर VWAP also. Market has our discount price, market hold at our point of control right here, and now market is trying again back above our value area high of pre-market, जहाँ से market ने क्या करा था, reject करा था, which means there's a definitely again there's buyers who can push the market above. What we're gonna do, we're gonna wait for at least a break above. You can see how perfectly market reacted from our point of control. It's a pre-market point of control, by the way. This one. Point of control, we all know that. What's point of control? Is there any issue in withdrawing up to 250? अब तक मेरे साथ तो नहीं हुआ है भाई, बिग भाई. लाइक मैं अभी एटलीस्ट लाइक 1.5-2 साल से मैं कंटिन्यूसली लाइक मंथ एंड में विड्रॉ करता हूँ, तो अब तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है. Market broke above our value area high, and this is also our initial value balance value area low. Now what market is doing? Market went up, market went down, and retesting it our value area low right here. So I'm gonna take a buy if market यहाँ से continuously continuous ऊपर जाती है, इसको break करती है इस candle को. My SL would be just below this one, and I think there's something wrong with my deep trades as of अभी. They're very small bubbles. I think मैंने small कर रखे हैं इनको गलती से. Let's try 4. Okay. There's a nice selling absorption. So what I want to see यहाँ पर, so this candle to close above, and right now I don't want to see कि जो हमारी green bubble create हुआ है, there's a buying orders यहाँ पे, वो absorb. I want to see ये accept हो, market यहाँ से initiative ले for the buy. So my MT5 is ready. Whenever if candle close above that or go above, that's where I'm gonna take a trade above that candle. And my, like suppose if I take a trade right here, my SL would be just below this one, value area low, which is also at our like, or maybe slightly below at our VWAP, but most probably just right here. But I don't wanna right here. And my TP would be just at our
camel level. Okay. Also, let's open our where's that? Okay, that will be my trade if this candle join is, kind of what market is doing here. This you can see market is in a balance. It's not absorption, it's not a trap. Market is just in a balance. अगर ये हमारा ट्रैप होता then you will see कि या तो हमारा CVD हायर हाई बना रहा होता या तो वो लोअर लो बना रहा होता. But right now our CVD is also ranging and our price is also ranging. But you can see CVD ने aggressively यहाँ पे ब्रेक नहीं करा है इस कैंडल को. But यहाँ पे there is a huge buying candle. CVD divergence bearish. Okay, gold में NASDAQ is there. It's not creating lower low यहाँ पे तो. गोल्ड में POC 4724 अराउंड आ रहा है. Let's see what's happening with gold. Okay, yes, gold is retracing down a bit. Gold is at our nice point of control as well as our this nice buying zone. What's happening with our damn, that's a definitely a divergence. Okay, this was a nice divergence. हमें यहाँ से okay, इसकी बात कर रहे थे आप फ्लटर भाई. This one. This was the divergence. That was a god level entry यहाँ पे selling की कोड के लिए. This one. यहाँ पे. Okay. At a retracement, because we are breaking our point of control, so at a retracement of right around this level, we can look for a sell trade यहाँ पे कोड के लिए. A bit late, but definitely it would be a very nice trade यहाँ पे. A nice divergence in the trade. I hope कि आप जो मुझे बता रहे हो तुम में से किसी ने ली हो ये ट्रेड. I missed the trade because of technical glitch, brother. हमने संडे को यही यही समझा था. हमने संडे को सेम चीज समझी थी और ये लाइव हो रही है सेम चीज. यू कैन सी हाउ मार्केट वाज गोइंग अप राइट हियर एंड उसके बाद जो हमारा डेल्टा है वो पहले से ही लोअर लो क्रिएट करने लग गया. बट मार्केट वाज स्टिल मेकिंग हायर हाई विच मीन्स देयर इज अ डाइवर्जेंस. और जो हमारा बाइंग प्रेशर है वो कम हो रहा है एंड देयर इज अ पॉइंट कि हम मार्केट क्या करने वाली है यहाँ से रिवर्स. हमें वो कैसे पता लगेगा कहाँ से. देयर इज अ नाइस गेट्स टू लेवल यहाँ पे. वी हैव अ नाइस वैल्यू एरिया हाई जहाँ से मार्केट रिजेक्टेड. देयर इज अ नाइस absorption यहाँ पे and also initiation of the sellers right here. So that could be a very nice selling level that we definitely missed because my focus is on NASDAQ fully as of now. I think I should buy one more monitor, like 2 or 3 monitors, to look out for different charts at same time. भाई मैं जरूर लेता. इट वाज सो इजी टू ट्रेड. मेरी आईडी पे कोई टूल ड्रॉ नहीं हो रहा था बिकॉज मेरी आईडी ड्रॉ कर गेट पता था इसलिए आई गेट समथिंग स्टॉप. इट्स ओके. एटलीस्ट यू नो कि यू नो कि क्या करना था. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ट्रेड जो आएगी डेफिनेटली यू कैन टेक कमर आलम भाई. right here a nice there's a huge orders right here and this is also our balance. Okay, you can see this one. So what market was doing, there's a nice
a small balance, market creating balance above यहाँ से नीचे, and then market ये पूरा जो bearish bullish move था, तो this is our balanced market as of this one. But that was a very nice. How much it could be? 49. Okay, it's like almost 200 pips, 190 200 pips trade could be. एंड इसका डेफिनेटली आरआर काफी एग्रेसिव होता, काफी अच्छा आरआर होता है इस ट्रेड का. इफ यू सी, वेट, मैंने डिस्कॉर्ड में अभी भी नैस्डैक ही कर रखा है, इनको भी दिखाते. लेट्स सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. So if we took a trade like at our perfect divergence, and also at our selling initiation, which is right here around this one, could be at 1:2, maybe slightly above the 1:2. Yeah, 1:2, 1:2.4, 2.5 around something. Could be a very nice one. But let's see what's happening with NASDAQ now. Because no, कमर आलम भाई अलग है, कमल भाई अलग है. कमल भाई अलग है, कमर आलम भाई वो है FX ट्रेडर खान वाले. And you know what I think? I think in NASDAQ is back in its range era. Again, it's started to range now. Okay, let me switch. We broke this again. Now this is our value area high again. Our point of control is above, so definitely we would look for a buy trade. But look at this. Our delta is creating lower low, but our candle is not, which means our passive buyers are holding the sellers. But still, let me try यहाँ पे. Let's see if we get a nice. Do you think gold? I'm trying a buy on this. Okay, NASDAQ पे let's see, देखते हैं यहाँ पे. Let's switch करते हैं एक बार गोल्ड पे. ये तो चलती है. I'm just seeing it 75 से what is happening, but yeah, gold पे what's happening with gold? Maybe, but there's a that, that was a nice divergence यहाँ पे. But right now यहाँ पे जो हमारी big trades थी, they are holding यहाँ पे buyers. Could be a retracement, could be a retracement, or but I would not buy अभी गोल्ड को जब तक गोल्ड हमारे वैल्यू एरिया को यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे ब्रेक नहीं करता हुआ. वी स्टिल एट आवर लाइक जो हमारे कल की प्रीवियस कॉम्पेक्सेशन की रेंज थी, इट वाज दैट वैल्यू एरिया हाई एंड मार्केट रिजेक्टेड इट, विच मीन्स मार्केट उसको रिजेक्ट करके दोबारा कहाँ पे आएगी, हमारे बैलेंस्ड मार्केट के अंदर. तो जब तक आई डोंट थिंक सो आई विल ट्रेड गोल्ड बाय, अगर ये हमारे जब तक ये वैल्यू एरिया हाई पे यहाँ पे ब्रेक नहीं करता.
Let's switch for the Discord too. NASDAQ is going fine. It's going fine. It's actually making nice high up. Okay, what about gold? I mean, my view are matching with you. So you have to your view are matching with me. कमर आलम भाई आपको लेनी चाहिए थी यार ट्रेड इतनी अच्छी ट्रेड थी कि आपने मिस कर दी okay ES is breaking our initial value balance which means there is a definitely a nice bullish chance and ES um nope I'm not gonna trade ES abhi. Market is making a value above definitely there is a definitely a chance market यहाँ से buy जा सकती है but अगर ES buy जाएगा then I can expect from the NASDAQ too. So I'm already in NASDAQ trade. So just I'm gonna hold the NASDAQ one because why taking ES when I'm already in a NASDAQ and studying profit? Because market is creating value above and we just broke our initial value balance. So there's a definitely a chance we could go at our call resistance right here. That is our nice area to target. And this is also our exact यहीं पे हमारा क्या है gamma बॉल भी है यहाँ पर हमारा एंड उसी के थोड़ा ऊपर हमारा फुट सपोर्ट भी है बट वो SPX का है सो ओके सो या अगर हम ES से एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाने के देन NASDAQ से डेफिनेटली सो दैट्स व्हाट आई एम होल्डिंग NASDAQ लेट्स स्विच टू NASDAQ पे देखते हैं व्हाट्स NASDAQ डूइंग दैट्स व्हाट where did I enter you ask me definitely not that great entry and right here I'm just gonna move my SL to entry very soon because we are just tapped into our value area high of initial value balance. What I'm targeting this one, like around 3 hour setup, and then we will be managing it. Let's switch to the next gold. What's happening with gold now? Yup, creating the S&P, S&P and NASDAQ. Don't. I don't trade S&P, but yes, I can see your vision, K. What you're trying to say. And I don't think so. There is a huge volume in it right now. Why the text is white? Why they are white? Okay, now they are black. Buyers. I see buyers. Oh, NASDAQ give me a nice push. Give me a nice push. It's almost like in NASDAQ already 30 points. They are not enough though. Almost 40 points now. So we are 40 points above in NASDAQ. And I'm moving SL to 50% cut myself right now. I'm just holding to the call resistance above.
And as always, after the closing the trade, we're gonna send what there's no wick below it. You know what? जो हमारा gold है और जो हमारा if I switch to the mini gold, micro gold, then you will see how our deep trades, because it's key, about the contract size. तो जो मैं लंदन में जब जो मैं ट्रेड लेता हूँ लंदन सेशन में वो मैं माइक्रो गोल्ड में लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो हमारी डीप ट्रेड्स जो हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन दिखाता है वो काफ़ी ज़्यादा दिखा देता है छोटे से उस पे थ्रेशोल्ड पे, बट इट एक्चुअली वर्क्स इन लंदन सेशन. It works nice. Let's switch to the main goal जहाँ पे हमारे एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस होते हैं. या तो वी कैन जस्ट या थ्रेशोल्ड को थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ पे. Now we can clearly see heavy aggression of the traders, of the buyers, sellers, and there's also an absorption of the sellers. Buyers are trying to initiate, but delta is a signal. There's no follow through by the buyers after absorbing the sellers. Right now, and our is at entry with an NASDAQ. Discord पे what we are looking for. Okay, gold. Oh, fine. Let me see on the gold. क्योंकि आज मैंने गोल्ड में CVD देखा था लगा के. What I found, जो फ्यूचर्स पे मुझे डाइवर्जेंस दिख रहा था वो ट्रेडिंग व्यू में डाइवर्जेंस नहीं था. So they are definitely not that accurate. And why my CVD is not working on trading view? ओके कमर आलम भाई, लगता है मेरे ट्रेडिंग व्यू पे भी वो काम नहीं कर रहा. वॉल्यूम प्रोफाइल और CVD कोई इंडिकेटर काम ही नहीं कर रहा ऑन ट्रेडिंग व्यू वेब. ओवर मिनट CVD डाइवर्जेंस इन व्हाट? गोल्ड में तो नहीं है यार. गोल्ड में तो देयर इज आई मीन देयर इज अ डाइवर्जेंस. नो. There's an extension. Okay, now it's working. Fine. Okay. यप, ट्रेडिंग व्यू में डिफरेंट इसलिए होता है बिकॉज वो रियल वॉल्यूम पे बेस्ड नहीं होता है. इट बेस्ड ऑन अ टिक वॉल्यूम, सो डेफिनेटली डिफरेंट होता है थोड़ा.
Today Santa excellent values and how do you trade according to it? How do you use them as? See, there are 3 or 4 levels only जो हम देखते हैं mostly. Like जितने सारे levels होते हैं वो हम नहीं देखते हैं. Just mostly 3 or 4 only. Call resistance, gamma wall. उसके लिए मैं ऐसा करूंगा, एक वीडियो बना लूंगा, मैं ड्राइव पे डाल दूंगा हमारे प्रीमियम चैनल पे. वहाँ पे टेक वॉल्यूम एंड रियल वॉल्यूम का डिफरेंस होता है. ब्रदर सीड ओके, मतलब ट्रेडिंग हम भी आ रहा ना डीप चार्ट्स. जो हमारी रियल वॉल्यूम होती है वो हमारी एक्सचेंज से आती है, जो हमारा सेंट्रल एक्सचेंज होता है, लाइक गोल्ड का कॉमेक्स हो गया, सीएमई ग्रुप हो गया, उनसे. बट जो हमारी टिक वॉल्यूम होती है वो जब प्राइस मूव होता है उसके बेसिस पे यू काइंड ऑफ जनरेट होती है, और वो बाय द ब्रोकर्स, लाइक जो हमारे ब्रोकर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं. ट्रेडिंग व्यू पे ओंडा हो गया, एफएक्सीएम हो गया, उस पर डिफरेंट डिफरेंट पे देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पे डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, डिफरेंट कैंडल्स होती है मोस्ट कभी कभी, एंड डिफरेंट इंडिकेटर के वो होते हैं उस पर. लाइक एफएक्सीएम पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऊपर होगा, ओंडा पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे होगा. तो वो मोस्टली आपको ये भी देखने को मिलता है. ओके, नेस्डैक वो हो गया हमारा, व्हाट वी से SL2 एंट्री हो गया, मतलब ब्रेक इवन हो गया. लेट्स जंप टू द नेस्डैक, व्हाट्स हैपनिंग. ये तो हो गया. ओके, ओके, फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ कंट्रोल right here, and our value area high of initial value balance, which means buyers are definitely don't want market to go above, and it's already like 1 hour हो चुका है market को open हुए, and this was the only displacement at a direction जो market ने create करी थी after market open यहाँ पे. So I think this is like safe to say कि वन ऑफ टू स्टेज हो सकता है जब मार्केट सिर्फ फर्स्ट 5 से 10 मिनट में मार्केट मूव होती है, एंड देन उसके बाद पूरा कंसोलिडेट करती है और रेंज क्रिएट करती है. Again, market reacted from our point of control, pre-market point of control, which was this. Connected. Then again, market went above at our initial value balance high, value area high, which is also our KX5. Reacted, trapped all the यहाँ पे buyers यहाँ पे, and then a nice selling. I think again हम इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं नीचे. NASDAQ and VWAP, definitely NASDAQ और VWAP, we can trade NASDAQ and VWAP. मार्केट इज बिलो द VWAP, मार्केट इज इन डिस्काउंट. और सी, जब जहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट करा है, दोनों बार मार्केट ने जब यहाँ से रिजेक्ट करा है, दोनों बार मार्केट कहाँ पे थी, हमारे प्रीमियम बैंड्स पे थी. This first you can see the bubbles, you can see the absorption of the buyers यहाँ पे. Then again जब मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई, you can see buyers were trying to push the market, but they got failed, they got absorbed above, and again मार्केट ने exact कहाँ से रिएक्शन दिया, कहाँ से रिवर्स हुई, from our premium level of VWAP. So it means it shows जो buyers हैं उनके लिए अभी भी ये लेवल क्या है, एक्सपेंसिव है. They don't want to accept the price इस लेवल के ऊपर. So each and every time when market ऊपर जाती है, it's rejecting it यहाँ से as of now. And this is our discount price. We know this one, and you can see how market sellers tried यहाँ पे and they got absorbed. If you see our volume profile, then you might see there's a nice, okay, right here. It's a selling delta, but there's no volume. Again, more sellers. And there's the thing, nice. Again, sellers, this is a squeeze, nice. This initial value very slow. A nice squeeze below. Large number of sellers. They got triggered right at this level. Below our put support.
large number of sellers got triggered at our below our put support right here. Don't send gold jacks. ओके हाँ मैं गोल्ड के जैक्स लेवल भेजना भूल गया एक्चुअली में. यस आई कल से आई विल सेंड लाइक मैं लंदन सेशन में भी भेज दूंगा गोल्ड के. अगर किसी को लंदन सेशन ट्रेड करना है तो मैं एशियन सेशन में भेज दूंगा उसके सुबह 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे. तो जिसको लाइक उसके बाद ट्रेड करना है लंदन सेशन में गोल्ड को यू कैन ट्रेड उसके अकॉर्डिंग टैक्स लेवल के अकॉर्डिंग. बिकॉज वो लाइक आपको मोस्टली अगर आप आज में भी देखोगे आज गोल्ड कैसे मूव हुआ है तो काफ़ी अच्छे से वो रेजिस्टेंस सपोर्ट एब्जॉर्प्शन एग्जॉर्शन वहाँ से रिवर्सल्स काफ़ी अच्छे आते हैं हमारे गैप्स लेवल से जो हमारे इंपॉर्टेंट गैप्स लेवल्स होते हैं. और मैं शायद एक छोटी सी पीडीएफ बना के या फिर वीडियो बना के मैं ड्राइव पे डाल दूंगा कि हाउ टू यूज़ द गैप्स लेवल्स एंड कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वंस होते हैं जिनको आप मार्क आउट कर सकते हो. दिस इज अ वेरी नाइस रिएक्शन एक्चुअली. ओके our discord is at our gold, so let me change it to the NASDAQ. Okay, yeah. So this was a very nice. Okay, now what I'm gonna do, I'm gonna sell it. Just a sell right here because we are in a definitely very heavy discount. A bit late entry. Or maybe there is a news. Definitely okay. Iran has yet to allow a tanker with UAE LPG to pass Hormuz. Trump participates in maternal health. Okay, Trump ki statement again. What we're gonna do now? Okay, gold is also kind of dropping. You can look for a sell on gold, by the way, if you want to. And now for the NASDAQ, I don't want NASDAQ to go above it. So इसके ऊपर I will put my SL. My SL will be just above this level. And this is a very, you know, what do you say, safe. So I want to see how market will react here. So this is a very huge order. So this is a aggressive discount price यहाँ पे. And if we close this, okay, see this is a very huge discount price and sellers are getting absorbed. But this is a huge selling pressure यहाँ पे market पे. So to absorbing like जो हमारे buyers हैं, if they're really strong enough to push the market यहाँ से ऊपर again in the range, then they have to break above this level. This is the level जिसने हमारे point of control को break करा था pre market के. So जो हमारा point of control था वो हमारे पहले buyers का kind of demand and what do you say demand and whatever उसके एज अ सपोर्ट कर रहा था उसको एज अ डिमांड बिहेव कर रहा था. बट नाउ सेलर्स ब्रोक दैट पॉइंट ऑफ कंट्रोल. सो आई विल एक्सपेक्ट दैट जो हमारे बाय सेलर्स हैं वो अब इसको एज अ एक्ट करें. सो आई डोंट वांट टू सी अगर ये कैंडल हमारे नीचे क्लोज होती है एंड वी विल सी अ नाइस बाइंग एब्जॉर्प्शन. और ये अगर ऊपर क्लोज होती है दैट्स अ फकिंग वियर्ड थिंग. And market still in a in initial value balance, market still in a balance. There is no kind of trend here. Okay. Closed inside the point of control as of now. And if we talk about the gold, what's happening with gold? Yep, gold is going down. A very nice reaction from our point of control. Rejecting our point of control. Can target the this one call resistance. Okay, I'm not sharing it. Let me share. Yes, sir. I'm considering Indian freedom. भाई अब यार ट्रम्प कब क्या कर सकते हैं हम बताओ यार. अब ट्रम्प रोज अपनी न्यूज दे देता है. सी जैसे हम कोई भी गैक्स लेवल पे आते हैं यू कैन सी द रिएक्शन के वहां से हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग फ्रॉम दैट लेवल. आई वुड कंसीडर फ्लटर भाई, ऑब्जेक्ट भाई.
Where is your TP on gold? It could be अगर अभी भी you are in a sell risk free, then I think यहाँ पे close करके partial or half you can hold the trade to this call resistance area. There's a one big trades right here also, but या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर. 4699, that's okay. So around right here. Damn, नीचे काफी. But you don't want to see यहाँ पे हमारे sellers absorb हो. You don't want to see हमारे sellers यहाँ पे absorb हो. NQ again, NQ is not uh, doing good because of the Trump, of course. I'm considering renewing Project Freedom. Iran said the US will have to remove the nuclear dust. What? Iran said the US will have to remove the nuclear dust. Okay. Again, at our fair price, and now market is reacting as a from our view. Let's see what's happening with gold. Mm, We are on a gold. Fine. What 477 should trigger a long liquidation. 4500 should not technically hold. We can see for the damn इतना नीचे 4300 477 I think futures का where is 477 on trading view on a 5 minute time frame 4700 is like right here. Yep, like जो हमारा 477 है वो हमारा futures का अराउंड यहाँ पर है और मे बी दिस वन जो हमारी गैमा वॉल है. सो यस डेफिनेटली अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हमें स्क्वीज देखने को मिल सकता है डाउन साइड. उस मार्केट दोबारा हमारे बैलेंस को अगेन यहाँ पे ब्रेक करके नीचे जाएगी. And this is GC, so I don't want to see that much small trades. There was a selling sellers absorption of the sellers. We just took only 2 trades और I think एक हमारी ब्रेक इवन गई है और दूसरी हमारी छोटा सी प्रॉफिट के साथ दोबारा ब्रेक इवन गई है अभी तक दोनों NASDAQ में. एंड ट्रम्प इज स्टिल एक्टिव और वो भी दे रहा है स्पीच. Uh, 477 is well defended, but buyers will get excessive soon, I feel. I mean, yeah, definitely काफी aggressive level है. We have this text 3, we have this huge buying orders right here, big trades, which can defend this level. We want to see exhaustion for the buyers, by the buyers. अगर we want market to go back inside the second distribution again, right around right here below the 4700. What you can see. Okay.
Yes, it's very interesting. Yes, भी हमारा range में है, but it's respecting our value areas very interesting, very nice, nicely. I just rejected from our value area low, and now again kind of like kind of ranging or consolidating around our point of control. Let's cleave a bit. So let's again delete this one. This is a value area have initial value balance, like a pre-market. So we don't want this also. We want this one. We want this one. These are the two nice levels. This one. This one. Yeah. You will see below the वैल्यू एरिया और जो हमारा वैल्यू एरिया है उसके नीचे मोस्टली जो हमारा डेल्टा है वो पूरा हमारा बियरिश डेल्टा है बट राइट नाउ वेयर इज द मार्केट वी आर ऑन NASDAQ राइट ओके वी आर नॉट इन NASDAQ नाउ वी आर ऑन NASDAQ जो हमारा वैल्यू एरिया है उसके नीचे पूरा हमारा सेलिंग डेल्टा है सो अभी हम कहाँ पर है वी आर अबव द वैल्यू एरिया लो यहाँ पर जहाँ पे हमारा वी डोंट हैव यू नो aggressive selling delta right here and our point of control is also around here. Definitely market again from the discount price of the VWAP. Market just hanging around in this range. See this went up at our fair price, again at our premium band, then again at our what discount zone, then again at our first premium price as of now. SL लगेगा लग रहा है my SL is about 474735. You are in a buy trade on gold. Okay, you are in a sell trade. Okay, yes, yes. You are in a sell trade and your SL is right above 4735. Then ली कहाँ से थी ये ट्रेड यूसी के नीचे लिया था यूसी के नीचे 1 मिनट पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे अराउंड यहाँ पर टाइम पूरा लो पे ना देयर इज नो फन इन द मार्केट ऐसे इफ ट्रम्प ऐसे एक्टिव रहेगा तो नो नैस्डैक अगेन नैस्डैक दोबारा हमारे वीएफ से दोबारा रिवर्स हो रहा है so it's in the range it's safe to say I think it's in the just you know initial value balance वाली range में ES also same and if we talk about gold में as of now I don't see any entry point अभी gold के अंदर I want to see some entry point on gold अभी मुझे कोई entry point दिख नहीं रहा है कमर आलम भाई आई थिंक आपने फोमो में ली है ट्रेड क्योंकि आप जो अच्छी वाली ट्रेड थी जो हमारा ए प्लस सेटअप था जिसकी जिसकी हमने संडे को बात करी थी गूगल पे जिसकी हमने एग्जैक्ट बात करी थी कि हमें कौन सी ट्रेड लेनी है कौन सी नहीं लेनी वो आपसे मिस हुई है आज अब उसके फोमो में आपने ये सेटअप लिया है जो आई डोंट थिंक सो जो हमारा ए प्लस सेटअप जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ दो तरह की ट्रेड्स लेनी है उनमें से एक बी पे भी अप्लाई करता था ये सेटअप
Exactly. Don't follow. I can look for gold trade, but as of now, I can't see any entry point. There's some volume, nice volume. There's some these two candles, nice volume, but our delta is very slight, not very big. No, but it, it shows us sellers got absorbed from our X3 level. This one, and now they're bringing back above our X3 level of GLD. I tried a lot, but didn't get it. So, श्योर आज अभी कर देते हैं हम लाइव के बाद आई विल मेक अ वीडियो स्मॉल वीडियो एंड उसको हम या तो डायरेक्ट डिस्कॉर्ड पे डाल देंगे या तो मैं ड्राइव पे डाल दूंगा उसको ऑर्डर फ्लो वाले दिन या एक अलग से ड्राइव बना के जो गेक्स लेवल वाला है वहाँ पे डाल दूंगा सबके लिए डाल देंगे वो फॉर द जो हमारे नॉन प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके लिए भी डाल देंगे गेक्स गेक्स लेवल तो if they want to trade because it helps to find out the actual resistance support in the market. ओके डेफिनेटली जो हमारा सीवीडी है वो ट्रेडिंग व्यू से काफ़ी डिफरेंट है आई एम सीइंग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का सीवीडी और देयर इज अ डिफरेंस यहाँ पे काफ़ी see this one see this our delta is purely see this purely in a range. Let's go to the 1 minute time frame. We will understand it better. See, our CBD is purely in a range, but right यहाँ से from this level, market started creating higher high, but our CBD yet not broke this one. Okay, it's still in a kind of range, and our price is making higher high, and our CBD is not moving, which means, and now what is CBD doing? CBD creating lower low when price is now was creating still creating higher high, which means this there is a definitely a chance the market यहाँ से kind of small divergence, not that kind of divergence जो हमें first time में दिखा था, but still a nice divergence यहाँ पे small. We wanna see a confirmation, and then we can look for a selling maybe. And we can also see buyers are getting absorbed यहाँ पर ऊपर. This is a nice indication also. And if we use our VWAP, then you can also see we have a fair price very यहाँ पे पूरा नीचे उससे लाइक अराउंड लाइक अब जो हमारा कॉमेट सेशन ओपन हुआ था उसके बाद मार्केट पूरा अबव द प्रीमियम प्राइस मूव कर रही थी एंड इफ आई ऐड अनदर बैंड इन इट लेट मी
how to enter? Um, yeah. If I add another band, then you will see मार्केट जो हमारा थर्ड प्रीमियम जोन है वहां से मार्केट ने रिवर्स करा था। तो मार्केट तो काफी एग्रेसिवली ओवर प्राइस्ड पे थी, उस पे थी एक्सपेंसिव एरिया पे, जब हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था। एंड देन आफ्टर दैट मार्केट क्रिएटेड एक लोअर लो टू रीटेस्ट एट आवर फर्स्ट प्रीमियम जोन, देन अगेन वेंट अप। नाउ डेफिनेटली अगर हम सेलिंग के लिए देखेंगे तो आवर टारगेट वुड बी दिस gamma wall which is also our call resistance or this fair price we were so around like जहाँ तक। But for that, we want to see a confirmation, which we haven't got yet. And we can definitely see our CVT is definitely making lower low here. And now price is ranging, which means our kind of passive buyers are short down the only strategy this can make you. See, no strategy can make you profitable जब तक तुम उसे खुद स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करोगे, प्रॉपरली रिस्क मैनेज नहीं करोगे अपना। यू हैव टू लुक एट द चार्ट्स फॉर आवर्स, दिन में 2-3 घंटे, 4-5 घंटे, 6-7 घंटे आपको एक महीने तक 2 महीने तक देखना पड़ेगा टू फिगर आउट द पैटर्न, कि आपको पता लगे कि यस दिस इज द पैटर्न जो हमने स्ट्रेटेजी में देखा है। यू नो व्हाट वी गोना लुक फॉर यहाँ पे अ नाइस आवर डेल्टा इज क्रिएटिंग नाइस लोअर लो यहाँ पे। एज ऑफ नाउ वी वर क्रिएटिंग this is a buying pressure but our delta was flat, you know, a small यहाँ पे 2-3 कैंडल्स का we got divergence, but again उसके बाद our delta is making lower low when our candle is just ranging, which means our buyers are absorbing the sellers at this area. So we want to see a break above or below it. Whoever breaks it may direct the market in their direction. So definitely it's just like 8:30 around. So we can definitely look for a trade on gold यहाँ पे if we get any. NASDAQ is dead. NASDAQ is not doing anything as of now. Yes, reacting nicely from our value area, but not a very nice move. Very small moves. What else? I'm just working today's fake. You अच्छा अच्छा okay. Wait, what? क्या कुछ रील भी डाली है क्या किसी ने? I'm just I don't know. आई डोंट नो डिस्कॉर्ड में यार आई सी के जो प्रॉफर्म के डिस्कॉर्ड है, जो हमारा डिस्कॉर्ड है, जो दूसरों के डिस्कॉर्ड है, उसमें सारे प्रॉफिट ही अपलोड करते हैं, सारे ही प्रॉफिटेबल है, एक सारे ही ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, सारे लाइक 3-4 हज़ार डॉलर, 5-6 हज़ार डॉलर, 9 हज़ार डॉलर उसके स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू पे खाली। Trump, I will take off the gasoline tax for a period of time. Trump wants to pause federal gasoline tax. Trump, Project Freedom would be part of a larger operation. Trump, we will deal with Iran until an agreement is reached. Okay. Trump,
Iran hardline leaders are going to fold. Okay, so ये basically बोल रहा है कि ईरान is just going to like kind of give up. उसे माननी ही पड़ेगी मेरी बात उनके लीडर्स को. Our NQ is like very much like rotating between our VWAPs. Premium discount, premium discount, premium discount. That's all. Nothing else. बस यही कर रहा है restrictive. And again our delta is creating lower lows. Our sellers are were getting absorbed यहाँ पे. There is no lower higher high यहाँ पर. It was just a ranging which means buyers were getting sellers को absorb कर रहे थे हमारे buyers. But looking at this might like जो हमारे buyers है वो exhaust हो सकते हैं यहाँ पर. And that's the thing we want to see to sell the gold. I don't know, there must be some lamp indicator. You know what? Indicator. Indicator. How does? What if अगर हम nothing. Okay, now that's the thing we want. A break below this GEX 4 level in order to sell the market. That's where we're gonna sell it. That's where we're gonna sell it. And you know what? I'm gonna risk double this time. Okay, abhi nahi. We are still waiting for a confirmation. But what I'm gonna do, I'm gonna double my risk because this month our payout is coming tomorrow of by the funded next. So as always, I'm gonna post it in the Discord. So what I'm gonna do on the other top account, which is not funded next, I'm gonna take a double risk like around 1.5% maybe, and then we'll take a trade on gold. By the after the confirmation, see this at our GEX 4. Okay, let me close this now. At our GEX 4, this candle, this bearish candle was a nice bearish move, but our delta is positive, which means there in this candle there are like aggressive buyers. They were trying to push the market, but passive sellers are kind of absorbed them यहाँ पर. Again, positive delta, positive candle. I don't know, there must be some lamp indicator, lame indicator, lamp indicator.
Nice, again a nice positive delta, but you can see this candle closed with a nice wick. What we want to do now, we want to test a sell, but still waiting, by the way. Still waiting. Still waiting. We're also, जहाँ पे हमने बैलेंस क्रिएट करा था, a small consolidation, we had our point of control वहाँ पे. There's a huge selling delta जिसने बायर्स को क्या करा था, बायर्स ने क्या करा था, जिसको ब्रेक करा था, which means now अब ये लेवल बायर्स के लिए क्या बन जाएगा, as a demand or support area for the buyers, and exact इस एरिया पे हमारा क्या है, प्रीमियम लेवल. It was a like pure इतना बड़ा बियरिश डेल्टा, पूरा नेगेटिव डेल्टा का फ्लश डाउन यहाँ पे. सो डेफिनेटली एज हम उस पे देखते हैं अपने चार्ट में, you can definitely see, like if you go on the 5 minute time frame, after a nice displacement we can see some like इसमें कोई भी major जो bullish candle नहीं थी, so we can definitely expect market से to create some kind of position building करने के लिए यहाँ पे, and then after that watching the stream while working out in between. So let's go Ujjwal bhai. Let's go. That's why we can expect market से कि to position out यहाँ पे अपने orders को after the huge negative delta, and then we can expect a nice flush down again if market is ready to push down at our call resistance or our fair price of VWAP. These are the two areas because market is very much in a premium, and I think for the buyers this was an expensive price जहाँ से market ने reject किया था, because this was our last session last COMEX session value area high. You can see there is a huge selling delta as well as higher volume node, again selling delta, again higher volume node, again selling delta and point of control. That's what we want to see. That was the level, and if you see our CVD was, what's it doing, it's creating higher high from right here, but market is not that aggressive, market is not creating that higher high. This is a nice bullish candle delta may, but this candle is just purely rejected. So now I can safely say this could be a nice reaction यहाँ से market का sell के लिए, if market इसको accept करती है तो. We want a nice break. Whoever is watching live and whoever is new, don't forget to subscribe, right? And also I'm thinking जो हम next video बनाएंगे YouTube की, या फिर next I think order flow concept होगा. I was thinking that one, I forgot. It was a very nice. mm, I will tell you.
Yet not कोई अभी like अच्छा entry point नहीं मिला है हमको. We're just waiting for that entry point. Because trading is a waiting game. We can't force our entry के हमको पता है मार्केट नीचे जाएगी तो हम कहीं पे भी एंट्री ले लेते हैं, सेल लगा देते हैं पूरा हाई के ऊपर. We don't do that. We want a nice entry point from where market actually moves either to our take profit, either to our SL. We still have like around 20 minutes left. So this purely यहाँ से पूरा higher. But from right here, market creating higher, but with not that aggressiveness, not that acceptance. Buyers are not that aggressive, that I can say. And if you look at the Nasdaq again at our same, its consolidation is also consolidating at our KEX5 above our initial value balance actually. But yeah, can go to the gamma or call resistance, but now it's a very near target. The only pair which we can trade today is gold, and we are waiting for an entry point. There's a volume imbalance on a 1 minute time frame. Okay, definitely. You see on a 3 minute time frame. Yep, nothing. Okay. See how market is reacting from our VWAP, and every time market हमारे VWAP पे आ रही है, there's a counterparty who is who's getting absorbed, who are absorbing that. Like see this one. There's a nice selling pressure. Market rejected from our GEX3 level, which is also happened to our we have premium first band premium, and you can also see the third confirmation you will get is a nice absorption of the sellers again and again यहाँ पर, and then initiative, and you will see इसके बाद इसके नीचे आई थिंक इट वाज इसके नीचे यहाँ पे उसके पहले पूरा मार्केट यहाँ पे प्रीमियम पे था, पूरा above the premium level पे था, and now market what market is doing, जैसे हमने CVD में बात करी, what market did a nice negative delta and its kind of arranging or creating a value. Same thing happening with the gold right here. What market did? Market created a nice displacement above. After that, what market is doing? Market is creating a balance inside the value area. That's why you are not seeing that aggressiveness in the market. That's why you are not seeing sellers getting absorbed. Sellers are getting absorbed where? Yes, yeah. Sellers are getting absorbed because as of now, on a 1 minute time frame, if you see this, what you can see here is the last three candles which are our which making lower low. But in this three candle, they are not making lower low. They are just in a range, which means there is a partial, passive buyer who's absorbing that selling delta right here, and market is happen to be our at our point of control, where is the highest volume traded in this range after the comic session open. That's why. Yes, where were we? Right here. Market created a nice uh, displacement right here. This was a very nice displacement. This market with the purple color. And now what you are seeing right here is the balanced market, because we know after the displacement, balanced market comes. What we can expect here, say. Now we know if we take volume profile, and I'm not talking about the
अब की वॉल्यूम प्रोफाइल, लेट्स जस्ट सपोज टेक अ weekly volume profile, composite volume profile, I mean. If you take this one, then you will see market is creating value above as of now. Like इसमें पूरे अगर हम लास्ट वीक की भी ले तो you can see this one, these peaks were creating. बट अगर हम सिर्फ इतने की लें, सिर्फ इस जोन की, जो हमारी फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट थी आफ्टर द मार्केट ओपन, लाइक नॉट आफ्टर द मार्केट ओपन बट like around this level to this one. And now let me hide this कि अच्छे से दिखाई दे this one. Then you will see what is this. This is creating P. What is P? Is a, we know what is PBD. हमने MT में समझा है. Is a part of the option market theory. What market is creating right here? Market is creating a P. First a nice displacement, and after displacement, what market is doing यहाँ पे? Market is creating a nice balance. What? अरे अरे whatever. It's creating a balance right here. That's why we are not seeing that aggressiveness market move. So we want to break it. And right now जो market mostly जहाँ पे you know range कर रही है, वो है हमारा point of control at this area, this one. If I, okay, makes sense. That's why it was not happening. If you can see, let me remove this. Also this, then you can see market is creating balance right here. And in between this range, जो भी हमारा important area आता है, in this range, जो भी हमारा important area है, मार्केट उसको फॉलो करेगी, मार्केट उसको रिजेक्ट करेगी, मार्केट वहां से रिजेक्शन या फिर एक्सेप्टेंस लेगी, बिकॉज मार्केट इज क्रिएटिंग बैलेंस. एंड जब मार्केट बैलेंस क्रिएट करती है, मार्केट क्या करती है? यू कैन सी हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग. फर्स्ट वैल्यू एरिया हाई से, देन फ्रॉम आवर हाईएस्ट हायर वॉल्यूम नोड जहाँ पे हमारे एग्रेसिव सेलिंग ऑर्डर्स थे वहां से, देन उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आई फ्रॉम आवर गेक्स 3 लेवल वेयर इट created this range low above our value area low, and then again went up, then again like at our point of control. So right now market is mostly trading at our point of control. So because for the market, for the buyers, this is the price which is they are accepting this price in the market. And why they are accepting the price after this displacement, which means this displacement is a fine for the sellers, for the buyers. They are agreeing to this, that this is a fair price after this displacement. So on on like a textbook setup, जो हमारा textbook setup होता है PPT का, उसके हिसाब से you can say कि after this balance market should go above यहाँ पे, should go above. But there's another you know thing you should watch out for यहाँ पे, कि how market, जो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो हमारा ऊपर है, वो हमारा नीचे नहीं है. ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड पी यहाँ पर. बट यू वांट टू सी कि हाउ मार्केट अनफोल्ड्स आफ्टर it get done with this, it gets done with this बैलेंस्ड एरिया और वैल्यू एरिया. अगर मार्केट यहाँ से डिस्प्लेस करके इस वैल्यू एरिया पे जाके 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 ऊपर अगर ब्रेक करती है, देन यू कैन डेफिनेटली सी यहाँ से एक्सेप्टेंस के बाद कि मार्केट पूरा पुश आउट करेगी ऊपर. बट इस वैल्यू एरिया में अगर मार्केट ब्रेक करती है, विच इज ऑल्सो अवर हैपनिंग टू आवर टू मेजर एरियाज, विच इज आवर गेक्स 3 एरिया, which market already rejected and sellers were getting absorbed here. And then this is the second area where sellers are getting absorbed again. There's a higher volume node and also a huge selling delta, which means sellers definitely triggered their entry right here in a very big quantity, and they got absorbed here. So these are the two areas right here. And after that, we have a nice call resistance as well as our gamma wall. And again, as अगर हम NASDAQ पे
लेट्स स्विच टू द NASDAQ टू सी, क्योंकि NASDAQ ने दोबारा हमारे वैल्यू एरिया हाई को रिजेक्ट करके दोबारा नीचे आए। सो NASDAQ इज अ प्योर रेंज टुडे एंड आई डोंट थिंक सो किसी SMC ICT वाले ने भी इसको ट्रेड करा होगा। आई डोंट सी एनी नाइस प्राइस एक्शन यहाँ पे किया होगा तो वो डेफिनेटली अगर अपना ओके वी वर इन गोल्ड। So we are waiting just the market in the next like 15 minutes, maximum 20 minutes. Because फिर हमारे 9 बज जाएंगे and we know we don't trade after the 9, 10, 9, 5, 9 p.m. So I will wait for another 10 or 15 minutes. If market breaks above it, then I'll just send it to you on a Discord channel, सबको on a trade talks, what market unfolds and what we will look for उसके बाद. So I will definitely update all of you. But abhi market again at our point of control, at our balanced area. And if we see our what is our CVT doing, and again you will see it's creating higher high right here, and market is barely following it because you can see an absorption and under large wicks again. There is also there's another news here. पर Trump said I am going to meet a large group of generals about Iran. That's why market is slow because up now market will wait for the Trump statement after the meeting because Trump is going to meet a large group of generals about Iran. Just remember this, the moment war will be over, you will see a crazy winning streak on this channel. Crazy. We are still winning, we are still like posting our winning streak. But after the war will be over, you will see every day because right now we have to wait. We have to wait कि मार्केट अगर अच्छी जगह पे जाती है हमें अपना प्रॉफिट कट करना पड़ता है, हमें ब्रेक इवन पे क्लोज करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट पे न्यूज आ जाती है. बट व्हेन द दिस वॉर विल बी ओवर, you will see how the actual order flow works. Pure like 6 RR, 7 RR, 8 RR trades, 9 RR trades. That's the kind of thing you will see. Because right now market is just चलते चलते market अभी कभी भी डेड हो जाती है. Now at our premium zone, market is just in a balance. Yeah. And our price is making higher high, kind of, but our delta is not. I would say our buyers are definitely getting absorbed यहाँ पे. But still, I want to see अगर हमारे buyers absorb भी हो रहे हैं तो हमारे जो sellers हो aggressive हो. They, if they really want to push the market forward. We have like around 10 minutes. 10 minutes में अगर कोई हमें setup नहीं मिलता है तो I will end the stream, but I will keep update you guys about it.
No product aggression in delta. Price is moving side, but not the buying aggression. See this. How our delta is performing and how our candle is making higher high यहाँ पर, but our delta is not. Now at this point I want to see a divergence. अगर हम हमारा CVD lower low create करता है और हमारा प्राइस ऐसे ही, okay, this is very interesting. This is very interesting. Now see this, guys. From this particular candle, our CVD is creating lower low and our price is going kind of up. Like, I want to see this candle to be close below. I want to see a negative delta in the next 4 seconds, 3 seconds. Yep, like this exactly. Now this is a 1 minute divergence. Now this is kind of thing we want to see in the gold, a divergence. Now which means our delta is performing lower lows, but our price is performing higher high. Now where's the that one level जहाँ से भी there is a chance कि market यहाँ से react कर सकती है, market यहाँ से नीचे जा सकती है. Okay. Now that's the thing we didn't want to happen. We don't want a positive delta. We just want a divergence to continue. We have a huge selling delta at this point. Yeah, but if this high volume node, definitely look for this one. If market breaks it or accepts it, because yep, our delta is not anymore diverging, just goes back. Fed bids for 6 month bills total $4.8 billion. Fed bid 3 months bill total $5.6 billion. Okay. Yet no selling aggression. I didn't want to see this bullish candle. अगर ये bullish candle नहीं होती and price ऐसे ही नीचे lower low बनाता रहता, and now CVD and the price is again creating a higher high यहाँ पर. That's the divergence, right? This is on a 1 minute time frame. जो लास्ट डाइवर्जेंस था वो हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे था, इट वाज वेरी क्रेजी गुड, राइट? क्रेजी लाइक अराउंड 200 पिप्स का वहां से मूव आया था. इट्स काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग वी वांट यहाँ पे. नाउ सी, राइट, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. फ्रॉम दिस एरिया our CVD is creating lower low, but at this area price is creating kind of higher high. Now the thing is, from where market will reverse, from where we should take our look for a trade. There's a 5 minute time frame. We have this high volume node which is kind of accepting as of now. Yep, it is accepting. Market didn't retest and went above it, so definitely still reacting. So what I want to see, this is a nice, see this, we are on a 1 minute time frame, a nice सबकी फेवरेट हायर हाई वाली ट्रेंड लाइन. एंड what you want to see यहाँ पर, a break already and now creating lower low right here from this level right here, which means this is a divergence. It's a 1 minute divergence.
I would definitely look for a sell trade, but I want a nice या तो एक aggressive selling delta हो और एक इनिशिएट या तो इनिशिएटिव हो sellers का nice एक अच्छी सी holding. If you see this one, there was a buying aggression यहाँ पे. This one, market went up, the selling imbalance right at these areas. That's why market went down. Our NQ is dead. NQ is just ranging between the VWAPs, discount to the premium. Again, it was at the value area high and now it's just at the premium level. हल्का सा ऊपर. So no, definitely not tradable. And also yes, we know yes, there's a definitely chance yes call resistance हो जा सकता है, which is at our gamma level. It's also like around plus 4 points, 40 point. Yes, 4 points. So we ain't gonna trade for the 4 points. On gold, we want to see a nice sell trade यहाँ पे अभी. We want to see a buyer's exhaustion यहाँ पे. On a 5 minute time frame, finally, not a divergence, but we can definitely see. Let's wait for how this candle close in the next 40 seconds. It will tell us the story what market wanna do. I want to see this candle to close below. अगर ये candle इसके नीचे close होती है, then that will be a nice thing to see. Okay, it won't, but gold. Okay, which one is this? कमर आलम भाई, जो भी ली थी आपने, यस नीचे वाली. Definitely this is a very FOMO one trade. You missed the right one and you took the wrong one. Mhm, mhm. Okay, we are gonna do that. We are at a 9 p.m. mark. You know what market is doing? Market is at our higher volume node, and from right there, market is not creating lower low at our price chart,
but market is creating lower low in our CVD chart, which means our passive buyers are still holding and they are not yet absorbed, fully exhausted. Let's wait for another 5 minutes. I want this candle to be closed, just to be closed below, so we can extend the stream length a bit, because we are very close to our entry point in gold. That's right. It was a nice reaction, yes, to our call resistance or this big trades, big buying trades. Yeah. Because of the nice displacement, market went up and now creating accumulating. It's just right there. Or should we buy the NASDAQ as of now? Because market definitely at our premium level, but there's a nice buying. Okay, there's a buying absorption around here, but the market went up. Okay, so we can't. Let me show you guys that I'm talking about. There's a huge buying absorption. There's a huge delta of buyers, which is they got absorbed here. So you should not trade this if they got absorbed here. You can definitely expect a sell instead of the buy in the Nasdaq. Let's move to our gold, because that's the last 5 or 7 minutes we are looking for a gold. If it closes below, if it gives us an entry, then we will hold. No. Iran, nuclear technology is not on the agenda of US talks. Enrichment is non-negotiable. Okay. Okay, now we can see prices moving, like it accepting our CVD. उससे पहले just like the जो buyers थे वो absorb कर रहे थे sellers को, but now we can see sellers are accepting our CVD also, like जो हमारा delta है, they are following our price यहाँ पे. But definitely this is not the level जहाँ से हमको trade लेनी चाहिए entry. As of now we have this point of control, we are in the value area, we are in the fair price अभी.
market is not yet ready to go either side. If we take early entry, market will just go above, जो अभी भी बैलेंस में होगा, वैल्यू एरिया हाई, स्टॉप आउट करके दोबारा नीचे आ सकती है. We want a precise entry, एक ऐसा, you know, we have to time it. We have to time कि हमें पता हो कि now इसके बाद मार्केट नीचे ही जाएगी, तो that's the, we have to time the market. We have to be very patient उसके लिए. We are already at the past 9. No. Okay, that's the game plan. Let me explain it to you all if you want to trade after this. Let me close this. Okay, we have some gag slab यहाँ पे. You can ignore it. There's no worries about it. And let me show. These this is the gold price. Okay, delta. Let me see the delta. There's a huge selling delta यहाँ पर. Okay, the aggressive sellers are present यहाँ पे, and aggressive buyers are present right here. So we want कि जो ये sellers है, जो delta है हमारा aggressive, ये hold करे और market नीचे आए, right? You know, here's the game plan. We know कि how market is moving. Market is creating right here a P, which means market first displays at higher prices, and now it's making a balance right here. Now our buyers, as of now, like on our textbook setup, it should go above, but right now, what our bias is saying, we want to look out for a sell trade. We have a nice bearish delta in this zone, exactly जहाँ पे हमारा मार्केट रिजेक्ट हुई है, जहाँ से हमारी ऊपर, और जहाँ पे how to erase it, और जहाँ पे मार्केट ने wait a second. Yep, right here. And let me, this is the value area high, which where the market rejected. So now what we want, this is the balance, and how uh, much this balance is. This is the balance, value area high, point of control, and value area low. And we have a huge selling delta. हम यहाँ पे भी देख सकते हैं huge selling delta in the market यहाँ पर. So right now market is just in a range. We want to see a break below this delta, which market like accept करे वो price को नीचे, price को point of control को नीचे, and look for the CVD for your confirmation. On a 3-minute time frame or on a 5-minute time frame, look for a divergence, look for an absorption यहाँ पे, and by that you can take a gold sell or buy entry यहाँ पे, but don't take an entry यहाँ पे जब तक gold इस range के अंदर है और वो range कर रहा है. अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके एक्सेप्टेंस पे एंट्री लो, अगर नीचे ब्रेक करता है तो उसके एक्सेप्टेंस पे एंट्री लो. बट देयर इज ऑल्सो अ थिंग विच गोल्ड डेफिनेटली डू काफी बार. दिस डेफिनेटली चांस मार्केट दोनों में से किसी को भी ब्रेक करेगी नीचे और फिर दोबारा इस वैल्यू के अंदर आके अपोजिट साइड जाएगी. तो दैट्स व्हाट वी कॉल रिजेक्शन सेटअप. जो मैंने लाइक नॉर्मली बोला है कि लेने के लिए रिजेक्शन सेटअप, रिजेक्शन 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 setup. What market could do, market can go below this value area low right here, and उसके बाद without the acceptance, that's why we have to look out for the acceptance, because market नीचे जाने के बाद इसके without any acceptance दोबारा इसके अंदर close हो सकती है, and वो फिर कहाँ जा सकती है, at the opposite side of our this value area, which is right here. So these are the two setups you should look out for in this gold trade. Just remember the two setups you should look out for today gold. फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, नीचे जाके अगर एक्सेप्ट करती है प्राइस को तो नीचे सेल, ऊपर एक्सेप्ट करती है तो बाय. अगर मार्केट ब्रेक करके दोबारा अंदर आ जाती है, एक्सेप्ट ना करे, करती नहीं एक्सेप्ट, देन यू कैन लुक फॉर अ अपोजिट ट्रेड, रिवर्सल काइंड ऑफ, एंड यू कैन टारगेट द अपोजिट साइड ऑफ द वैल्यू एरियाज, or depends on the momentum. So that's the game plan for the gold.
अभी गोल्ड जो करेगा आई विल सेंड इट टू यू, उसकी जो भी अपडेट होगी इन द डिस्कॉर्ड चैनल. So if you are new, then you should join our Discord channel. The link is in the channel's description. So yeah, that's all for today. I think it's just 9:15. So no trades, no trade Monday. As Monday tha, we didn't take any trade, any nice trade. We took two trades और दोनों break even पे थी, like वो scalp थी just before the initial value balance. So I would not like I would not count that kind of. So I don't think so. There's any trade for today. It's a Monday. ट्रम्प की न्यूज आई, there's a huge बाइंग प्रेशर मार्केट में आज. बिफोर द मार्केट ओपन गोल्ड भी ऊपर गया था, नेस्डेक भी ऊपर गया है आफ्टर द मार्केट ओपन, एंड उसके बाद मार्केट जस्ट काइंड ऑफ रेंजिंग इन नेस्डेक ऑल्सो, इन गोल्ड एज वेल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. कल मिलते हैं. कल हमारा सीपीआई है, तो आई थिंक कल काफी अच्छी मार्केट मूव करेगी. एंड टुमारो इज द डे वी कैन डेफिनेटली लुक आउट फॉर सम नाइस ट्रेंड इन द मार्केट. बिकॉज मार्केट अभी क्या कर रही है, मोस्टली हो सकता है कि मार्केट जस्ट is just being ready for the to position the orders like for tomorrow. So I'll see you guys tomorrow at the same time, 7 p.m. IST. Be ready. जब तक के लिए just look out for this gold trade. You know what to do. And if you want to ask any questions, you can ask me on Discord anytime. So yes, have a great night. Have a good night, guys. Enjoy your day.